Good evening. Namaste. I'm your friend Dr. Talwar. Thank you so much for joining me on the Facebook live today. And more than that, I'm so much grateful to you for sending me your queries off and on. Thank you so much for sending me your messages. ये इससे हमें हिम्मत बनती है कि हम आपसे बार बार बात कर सकें और अपने वार्तालाप को आगे लेके जा सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट टॉपिक पर्टेन्स टू द आईवीएफ सक्सेस रेट्स एंड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन देम। एक सिंपल भाषा में आईवीएफ करने के क्या-क्या तरीके होते हैं, उस पे कितना खर्चा आता है और आईवीएफ का सक्सेस का जो मापदंड है, इसे जानने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं, यही मेरा सब्जेक्ट रहेगा आपसे बात करने का आज। सो आने वाले 1 घंटे के अंदर मैं आपसे इन सब टॉपिक्स पे बात करूंगा। मेरे पास तकरीबन 12 सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपको दूंगा जो आप लोगों ने मेरे को भेजे हैं। So, as I've told you, I am Dr. Talwar and I work at CK Birla Hospital at Gurgaon. I have experience of 20 years in the field of IVF. मुझे 20 साल का तजुर्बा है IVF के फील्ड के अंदर और काफ़ी लोगों से जो आप आज हमारे श्रोता हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कुछ को मैं जानता हूँ, कुछ को हम आने वाले घंटे में हम जानेंगे। तो IVF एक ऐसा टर्म है जो आज से तकरीबन 15-20 साल पहले we didn't know much about it and it was a very rare and difficult term. But nowadays, IVF has become a very domestic term. Everyone talks about IVF, everyone is aware of IVF, and there are multiple small sub topics in IVF which people are actually aware of. And जैसे हम जानते हैं कि 5 में से एक दंपति को ये प्रॉब्लम हो सकती है और उनमें से काफ़ी लोगों को IVF की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अपने देश में देखें कि कितने लोगों को आईवीएफ होता है हर साल, तो हम पाएंगे कि तकरीबन 2.5 लाख लोग दंपति ऐसे हैं जो कि आईवीएफ से गुजरते हैं। इसका जो सक्सेस रेट है नियरली अराउंड 35-40% होता है एंड मेनी ऑफ द पीपल दे कंसीव, मेनी डोंट कंसीव, मेनी हैव गुड एक्सपीरियंस, मेनी हैव बैड एक्सपीरियंस। सो हम अपना जो एक्सपीरियंस है उसे कैसे अच्छा कर सकते हैं, हम अपना रिजल्ट्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में आज आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक सेंटर के पास कैसे पहुँचते हैं। हाउ डू वी रीच अ सेंटर? हाउ डू वी नो दैट द सेंटर इज गुड और द सेंटर इज नॉट गुड और द सेंटर इज बेटर? So simple terminologies which we use are IVF success rates and जब हम सर्च करते हैं एक डॉक्टर के बारे में, हम जानना चाहते हैं कि वो डॉक्टर अच्छा है कि नहीं। How do we know? How do we know कि that center where we want to go, that center is good or bad? Actually, how do we know? So what do we do? We are looking at basically digital marketing. जैसे मैं आपके पास आज पहुंच पा रहा हूँ, जैसे मैं आप अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं, आप सब हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप लोग ऑनलाइन हैं। अब तक अराउंड 33 पीपल आर ऑनलाइन हु वांट टू प्रॉब्ली इंटरेक्ट विद अस। तो डिजिटल मीडिया ही है जो हमको आजकल करता है विच कनेक्ट्स अस टू अ डॉक्टर। सो हम क्या देखते हैं एक वेबसाइट में एक डॉक्टर के बारे में? वी नॉर्मली लुक एट द सक्सेस रेट्स एंड वी वेरी कॉमनली फाइंड दैट द सक्सेस रेट इज 100%। हमारे पास में आइए, बच्चा होने का गारंटी 100%, और we see guarantee rates of 80%, 90%, 75%. Then there are many doctors who also write clinics. They say, in case you don't have a child, your money will be refunded. 3 IVF में बच्चा होगा वरना will refund your money. Then there are many clinics which are offering facilities to help you, like insurance. They do the things on EMIs. There are multiple ways the IVF units are trying to help you, contact you, and to make you to facilitate your treatment, and that's pretty nice. परंतु काफी हद तक आपको ये जानना है कि जो हम देखते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, जो हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, वो सब चीजें ठीक नहीं होती हैं। कुछ चीजें हमको बहका देती हैं एंड वी नॉर्मली गो टू एन आईवीएफ क्लिनिक और ए सेंटर लुकिंग एट सच टॉल सक्सेस रेट्स, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड नो यूनिट कैन गिव यू 90% or 100% success rates. There can never be guarantee in terms of succeeding in when we undergo an IVF. So ये कुछ चीजें आपको समझनी है, ये चीजें आपने जाननी है। आपको समझना है
कि आईवीएफ का जो अप्रोक्सीमेट जो रेट है, जो जो प्राइसिंग है आईवीएफ की, इट कैन वेरी फ्रॉम रुपीज 1 लाख टू 2 lakhs और इवन मोर। आपको जानना है कि आईवीएफ करवाने के क्या कारण होने चाहिए, और आपको जानना है कि वट एवर इज बिंग डन विद यू वो ठीक है कि गलत है। सो what happens when we go to an IVF unit, जो हमें हमारे आप सब लोग आके हमें बताते हैं when you go to an IVF clinic, so we are looking at a figure of say rupees 40,000 or 50,000 for an IVF cycle. We feel happy, we go to that unit, we start our case, but gradually हम सब देखते हैं कि उसका चीजें उसमें ऐड होती रहती हैं। पहले उसमें दवाइयाँ ऐड हो जाती हैं, कहीं पे कुछ तरह के खाने की गोली या टीके ऐड होते हैं, जिसका जो रेट है तकरीबन 70-80 हज़ार 90 हज़ार तक चला जाता है। तो जो 50 हज़ार का हमारा एक एम था, जो हम सुनकर गए थे, नाउ दैट इज बिकम 140,000, 1,40,000। अब इसमें ऐड हो जाता है इक्सी ऐड करेंगे, they'll add 15-20,000, they do blast transfer, they'll add 15-20,000, and as gradually we move, they say we'll have to freeze, we'll do an FET cycle, we'll do a laparoscopy, we'll do an stereoscopy, we'll do multiple ultrasounds. So हम ये देखते हैं कि जब तक हमारा केस खत्म होता है, तब तक तकरीबन nearly 2 lakh rupees we have spent on an IVF cycle, and you're wondering that I've gone to a clinic, the range of 40-50,000 or 70-80-90,000, but it has become 2 lakh rupees. और एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि इसके अंदर से हम बाहर नहीं आ पाते हैं। जैसे कि हमें एक्सी करना है तो pay for एक्सी, pay rupees 15-20,000 more, we go in for blast transfer or freezing. These are the add-ons in an IVF cycle, and that increases the amount of money which you people are spending. नथिंग रॉन्ग, जब भी हम कोई एक अच्छा इलाज करवाते हैं इसमें कुछ खर्चा आता है, पर आज आपको ये समझना है कि जो खर्चा आप लोग कर रहे हैं वो खर्चा ठीक है कि नहीं है, वो वाजिब है कि नहीं है, इज इट राइट और नॉट टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी, एंड इन केस इट इज बीइंग स्पेंट यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाई इट इज बीइंग स्पेंट, दैट्स द एम। सो सबसे पहले आपको ये जानना है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि ये आईवीएफ होता क्या है, व्हाट इज दिस आईवीएफ टेक्नोलॉजी एंड व्हाई इट इज बिकमिंग सो कॉमन नाउडेज। सो अगर आप डेटा को देखें, वर्ल्ड वाइड डेटा को देखें, सो हम ये जानते हैं कि तकरीबन 5 में से एक दंपति को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, और इनमें से काफी हद तक काफी लोगों को आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। और हमारे देश में ही तकरीबन we do around 2.5 lakh IVF cycles per year, and this number is increasing every year, and we are actually thinking that in the coming 4 to 5 years this number may even touch 5 to 7 lakh cycles per year. तो आने वाले समय के अंदर the people who undergo an IVF, the number is going to increase by multiples of lakhs with every coming year, and so would be the information gap जो कि भी है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और हमारा आज फेसबुक लाइव करने का जो जो टॉपिक हमने चुना इसीलिए है कि जो गैप है आपके बीच में और बिटवीन योर डॉक्टर्स एंड द क्लिनिक्स, उसको हम किसी तरह से कुछ कम करेंगे। तो आईवीएफ क्या है, व्हाट इज आईवीएफ? आईवीएफ इज अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ टेक्निक which has been done at very good quality laboratories and IVF clinics, where we when the patient comes to us, we do certain basic tests on them, we carry out some blood tests, we carry out their semen test, और ये सब जांच करने के बाद हम जांच करते हैं कि उनकी ट्यूब्स खुली हैं कि बंद हैं। ये जांच करने के बहुत तरीके होते हैं, and जब हमें when we come to know that okay, this patient has got blocked tubes or he has got low sperm counts or he has got some other problem, then we decide okay, we have to do an IVF for that patient. So in IVF we'll give the lady some injections. That injection will make her ovaries go bigger, and we'll be able to get 8 to 10 or even 12 eggs from her when we do proper stimulation by giving hormones. तो आपको टीके लगाए जाते हैं 10 से 12 दिन के लिए, कई बार 8 से 10 दिन के लिए, और जब आपकी ओवरीज रेडी हो जाती हैं, when वो follicles have formed and ovaries are have made these number of eggs, then we take an ultrasound probe, put a needle and retrieve the eggs by the process of ovum pickup. ओवम पिकअप करने के बाद में
साथ साथ में ही हम हस्बैंड्स के सीमेंट सैंपल को लेते हैं, उन्हें प्रिपेयर करते हैं, और इन सैंपल्स सीमेंट सैंपल को और एग्स को आपस में मिलाया जाता है. दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड देन दे आर इंक्यूबेटेड इन द इंक्यूबेटर फॉर सम टाइम, for 24 to 48 hours. And after 48 hours, we normally get a good quality embryo, which will be of 4 cell stage, or after a few days, it will become a blast. And then, when it has grown well, we'll transfer that embryo using a very fine plastic tubing into the woman's womb. So, उसको लेडी के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, और इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर. जो पूरा टर्मिनोलॉजी है, दिस इज कॉल्ड आईवीएफ एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, आईवीएफ ईटी. सो इस पूरी प्रणाली के अंदर जब ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट जब और इसका जो खर्चा है, जैसे मैंने बताया, खर्चा कैन वेरी बिटवीन 1 लाख टू अराउंड 1.78 और 1.9 लाख रुपीस. ये खर्चा एक स्टैंडर्ड खर्चा होता है, जो कि एक आईवीएफ साइकिल पे डिफरेंट क्लिनिक्स डिफरेंट रेट्स के साथ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे डू द आईवीएफ साइकिल. बट इन केस नाउ वी हैव सर्टेन अदर पैरामीटर्स कमिंग इन बिटवीन. जैसे इन केस द हस्बैंड्स semen sample is either not there or it is of very poor quality, we may have to go for a donor semen sample. If you go for a donor semen sample, it will add on to the expenditure of IVF by somewhere around 5 to 10,000 rupees. The other condition can be that the semen sample, when we see there are no sperms or they are of very poor quality, in that case we go in for a process called ICSI. In ICSI, we pick up every sperm separately with a fine needle, and we put that sperm inside an egg. We inject that sperm inside an egg. That is called ICSI. जब ICSI होता है तो जो एक्सपेंडिचर है आईवीएफ साइकिल का, वो तकरीबन 10 से 15,000 रुपया और बढ़ जाता है. So these are very simple things, but the problems come more when the woman has no eggs of her own. जब एक स्त्री के, when the woman has got less number of eggs or they are not there, we call it premature ovarian failure or poor ovarian reserve. When we face such a situation, we may have to take eggs from a donor bank. So we have got एग बैंक्स आर अवेलेबल, जहां पर आपके डॉक्टर साहब जो आपको देख रहे होंगे, वो आपके लिए एक डोनर को हायर करवाएंगे, एंड दिस इज कम्प्लीटली एनोनिमस. सो आपके डोनर को हायर करने के बाद में उस डोनर से एग रिट्रीव किए जाते हैं. दिस इज कॉल्ड एग डोनेशन. सो ऑल द एग्स व्हिच कम फ्रॉम द डोनर आर मेंट फॉर यू एंड दे शुड बी ओनली यूज्ड फॉर योर केस. दिस इज कॉल्ड एन एग डोनर साइकिल. तो अब तक हमने देखा कि जब हम आईवीएफ करते हैं, सो आईवीएफ का जो एक्सपेंडिचर जो तकरीबन हमारे पास में आता है, दैट इज अराउंड 1.5 लाख रुपीस टू 2 लाख रुपीस. जब हम इक्सी करते हैं, वी एड अराउंड रुपीस 15,000 in that, and when we are adding process of donor semen, we add around 5 to 10,000 rupees. But when we have to carry out egg sharing, the expenditure becomes very high, and we may spend nearly around 1 lakh rupees to hire a donor. So these donors are young women who, as per the ICMR guidelines, are enrolled with an egg bank, and as per our requirement, we inform the egg bank, and then you will talk to the egg bank directly and get a donor enrolled for your case. So इसका जो खर्चा है तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपए का और ऐड हो जाता है. और समटाइम्स भी when the woman is elderly, और अगर आपके पहले कुछ abortions हो रखे हैं, there may be condition where we may like to check your embryo, genetic analyze your embryo, that is called PGS, or we call it genetic testing. ऐसे केस के अंदर जो आपके एम्ब्रियोज क्रिएट किए जाते हैं, when you create an embryo in the laboratory, on day 5 we will take a small biopsy of your embryo, and that biopsy piece is then studied for any chromosomal problems. So whenever we carry out a PGS procedure, that may add on to another rupees 50 to 60,000 rupees in your case. The expenditure here will go high. So हमको what we have learned till now is that IVF is a very broad term. When we talk about IVF, it's a very broad term, and in the IVF there are multiple subsets. And as we add on different parts of IVF, the expenditure may become expensive. These are things we have to know. आपको जानना है कि आपको किस तरह से IVF, आपका IVF किस तरह से होगा
और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपके लिए है। दिस इज अबाउट द स्टेप्स ऑफ एन आईवीएफ। अभी आईवीएफ करने के रीजन क्या क्या है, ऐसे क्या कारण हैं कि हम एक वी टेक वी हम एक दंपति को, एक कपल को कहते हैं कि आपका आईवीएफ करना है। इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं? द कॉमनेस्ट इंडिकेशन वी हैव इज द ट्यूबल ब्लॉकेज। एक स्त्री के अंदर दो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। ये दो तरह के ट्यूब्स हैं जो कि डिम बनते हैं व्हेन द एग्स आर बीइंग रिलीज फ्रॉम द ओवरी। तो वो उन डिम को या एग को पकड़कर उनको कैच करती है और अपने अंदर लेकर आती है। और कुछ समय के बाद जो स्पर्म्स होते हैं आज वहीं ट्यूब में जाकर बेबीज को, एम्ब्रियस को, एग्स को एग्स को जाके फर्टिलाइज करते हैं। देन these eggs they become embryos and then they reach the endometrium of the uterus and where they implant. So whenever the tubes are blocked, we call it tubal factor infertility. It's a very common condition, and the tubal factor infertility is normally diagnosed very early in a young couple, and it's very easy to treat. So IVF is the only way by which we can do it. And many times we get phone calls from people कि सर हमारी tubes blocked है, हम क्या करें? क्या हम अपनी ट्यूब्स खुलवा सकते हैं? हाँ, क्या हम अपना लेप्रोस्कोपी करवाकर या ओपन सर्जरी कराकर ट्यूब्स को दोबारा से जोड़ सकते हैं आपस में जो कि बंद है? सो इसका हमारा जवाब रहता है कि हमको ये सब अवॉइड करना चाहिए। अगर in today's world when we have the facilities, IVF is always a better option in such cases. But important is that we have to always see that ट्यूब बंद होने का कारण क्या है। Normally tube बंद होने का कारण is tuberculosis, and this thing we have to see that in case there is tuberculosis is the reason, we should be able to treat TB before we take the patient for IVF and ET. क्योंकि अगर हम in case we don't treat TB before with tubal blockage, then the results may not be appropriate. कुछ और कारण हैं जिनकी हम अभी बात करेंगे बहुत शॉर्ट के अंदर, जो आपको लेके जाएंगे आईवीएफ क्लिनिक के थ्रू। और इसके अंदर जो बाकी कॉमन कारण है, कुछ लेडीज में बीमारी होती है, सर्टेन कॉमन कंडीशंस आर देयर लाइक एंडोमेट्रियोसिस। Endometriosis is a condition in which there is some deposits on the ovary, uterus, and the fallopian tubes, and the tubes can become blocked, or the ovaries can have some sort of deposits on them, और कई बार ट्यूब्स खुली रहती हैं पर ट्यूब्स ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। सो वी कॉल इट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। काफी ग्रेड का होता है, ग्रेड 1 2 3 4। अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट जब एंडोमेट्रियोसिस होता है there is a possibility that the fertility may become less in a couple. This we have to know in case you have endometriosis, how to proceed further. You have to know about your disease well. फिर कुछ कॉमन बीमारी है पीसीओडी की, जहाँ पर ovaries have become bigger in a girl, and she will make large number of eggs every cycle, and as a result the eggs are not being released, or they are released late. This is called PCOS or PCOD. ये भी एक कारण है कि जब लेडी में ओवुलेशन नहीं होता है, then we may have to go in for IVF or IUI in case tubes are open. These are two conditions, a few conditions that we've spoken about, but then there are some conditions like male factor infertility. जब when a male has got a sperm count less than 5 million, in that case we normally are recommending IVF. More than 5 million, IUI can be done in case the tubes are open. But in case the fallopian tubes are open and the sperm count is less than 4 to 5 million, then we are normally advising the couple to undergo IVF procedure. So एक तो जब sperm count बहुत poor है, we say हमको IVF करना चाहिए. That I think we are very sure that we are all aware of that. The second condition which comes to our mind is when sperms are present but they are of poor quality. Again, उनके अंदर कुछ, the sperms have got a morphological problem. They have some banapti problem where there can be a damage to their tail or midpiece or the head. In such a case, we carry out ICSI or MC. The aim is to pick up the good quality sperms from amongst the bad quality sperms. So पहली कंडीशन जो मैंने आपसे बात करा, स्पर्म्स हमारे पास में कम थे, नंबर कम था। इस कंडीशन के अंदर sperms are adequate but their quality is not good. Here to have proper sperm selection,
we carry out a thing called IVF ICSI. The third condition is that we have a problem where the male doesn't have any sperm. This is one very intriguing and problematic condition, very common nowadays when couples come to us and say कि हमारे अंदर तो शुक्राणु ही नहीं है, we don't have sperms, what do we do? So first of all, you have to know, don't be afraid. इसका पूरा इलाज है and the treatment is fully possible and we are doing it every day. So how do we manage such cases? इनको मैनेज करने का तरीका बहुत सिंपल है. अगर हमको पहले ये जानना है कि बॉडी में स्पर्म्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं. व्हेन वी डू द सीमेन एनालिसिस, स्पर्म्स उसमें अगर नहीं है तो हमें ये जानना है कि बॉडी में स्पर्म्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं. और इसे जानने के लिए वेरी कॉमन वे दैट वी कैरी आउट ए टेस्ट कॉल्ड FSH and we do the clinical examination of the male. Immediately we come to know whether he is making the sperms or not, because sperms may be forming but they are not coming out due to some sort of blockage in the testes or in the epididymis. Sperms बनते हैं but sperms बाहर नहीं आते. इसे जानने के लिए एक ब्लड टेस्ट है FSH का, आपको करना चाहिए. एंड इन केस पॉसिबल मेक योर गायनेकोलॉजिस्ट एग्जामिन यू. And in case sperms are being formed, things become very simple. The other condition is that sperms are not forming, or there's a hormonal imbalance. The sperms which are forming are not coming out, and when they're forming, they are very less in number. So in सब conditions का जो treatment है वो है IVF ICSI, जिसका जो normal charges are around 15,000 over and above what you are paying for your IVF cycle. So in IVF, in such a condition, we do testicular sperm retrieval. So what we do is that we take a small needle, we give the husband some anesthesia and take a needle and put the needle inside his testicles or epididymis. These are the parts of the male duct. ये एक ऐसी ट्यूब्स होती हैं जो कि जो स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस में उनको बाहर लेकर आती हैं. तो अगर इनमें ब्लॉकेज है तो स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाते हैं. So we take a needle and put this needle in the epididymis or testes directly, and with a syringe we can take out the sperms. These sperms were taken out. They can be very easily they can be prepared in the laboratory, and we can carry out ICSI. Male factor is a common problem, and ICSI is out of 10 patients we do in every OT, 5 or 6 they require ICSI. Very simple technique. Now the other condition is, which is very challenging, is that the woman has been advised IVF because she is not forming eggs. This is a challenging condition. बॉडी में उनके एग्स बनते ही नहीं है, डिम बनते ही नहीं है, या बहुत कम मात्रा में बनते हैं. ऐसा कब होता है? ऐसा होने का जो मेन कारण है वो होता है एक एल्डरली एज. When the woman crosses the age of 39-40 or more, the number of eggs being made in her body, they become very less. They come in thousands. When the woman takes birth, that time the number of eggs in her ovaries are in millions. But when she crosses 40, they are in thousands only, and they are also of poor quality. So elderly women, the women who cross age of 40 or 39, 40, they have poor quality or less number of eggs, and that may be an indication of carrying out an IVF for her. And in such a case, the IVF is done by maybe requiring donor eggs. As I've told you, so donors will have to be hired for you, और donors आपकी family से नहीं होनी चाहिए. Very commonly we have this thing coming up कि मैं अपने ही किसी रिलेटिव को लेकर आती हूँ, अपनी भाभी को या अपनी ननद को, जो कि एग दे देंगी. तो वी फील कि वो लेडीज हमारी फैमिली से हैं, उनके साथ हमारा जो मेल मिलाप है हर रोज होता है. तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन. बट एज पर दी जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, we don't carry out egg sharing, egg donation cycles by our own relatives. That has to be done from a bank. And same thing with the semen donor. When the male doesn't have sperms, we have to know that we can't have our friends, हमारे मित्र, हमारे संबंधी अपना सीमेन हमको नहीं दे सकते हैं IVF करने के लिए. Sperms को भी हमको लेबोरेटरी से ही प्रोक्योर करना होता है. These are the few things which you have to understand when you're going for an IVF cycle. Now another factor is that when the couple is staying together,
and everything is fine, and then they are not able to have a child. So what we do is that after the whole workup has been done, we can advise them IUI, and in case IUI fails, then we should go in for IVF and ET. This is called unexplained infertility. इसका हमें कारण ही नहीं पता है कि उनको बच्चा क्यों नहीं हो पा रहा. So now अब तक हमने बात करी है कि हम एक आईवीएफ सेंटर को कैसे नापते तोलते हैं. तो नाप तोल का जो हमको जवाब मिला वो ये है कि आईवीएफ सेंटर्स के बाहर जो लिखा जाता है, या फिर जो व्हाट वी रीड ऑन द डिजिटल सोशल मीडिया, दैट दे हैव गॉट ए 100% रिजल्ट, दे गिव यू 3 IVF साइकिल्स एंड से सम अमाउंट ऑफ मनी 2.5 lakhs, और अगर बच्चा नहीं हुआ तो मनी विल बी रिटर्न टू यू. दे गिव यू वेरी हाई सक्सेस रेट, जैसे कि हमारा तो सक्सेस रेट इज 80%, 90%, शर्तिया, गारंटेड, ऐसे टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं. और ये जानकर वी ऑल्सो फील वेरी हैप्पी एंड वी नॉर्मली गो टू सच यूनिट्स. पर आपको जानना है कि आईवीएफ का एक ट्रू सक्सेस रेट क्या है. उसके बाद ही आप एक तराजू में जो आज आप सीख रहे हैं उसको रखिए, और फिर जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं उनसे पूछिए कि आप इतना हाई सक्सेस रेट कैसे बता सकते हैं जो कि किताबों में लिखा ही नहीं है. So this is basically to the talk. My talk for today is basically to empower you. So आप हम सबको हमसे सवाल कर सकें और जान सकें कि हम जो ठीक कर रहे हैं, हम जो करना चाहते हैं वो ठीक है कि नहीं है. This will always this empowerment will always give you more courage and strength to move forward in a more positive way. So अगर हम दूसरा हमने ये जाना कि आईवीएफ के जो सक्सेस रेट्स हैं दे वेरी फ्रॉम लैब टू लैब. दे स्टार्ट फ्रॉम ₹1 lakh, दे कैन गो टू ₹2 to 3 lakhs. एंड फिर हमने ये भी जाना कि जब हम आईवीएफ करवाने के लिए जाते हैं तो वी गॉट ए पर्टिकुलर फिगर ऑफ say ₹40, 50, 60,000 rupees, and by the time IVF ends we have spent 2 lakh. तो वी आर शॉक्ड कि व्हाट हैज हैपेंड. हमने तो पढ़ा था 60,000 रुपया या 50,000 रुपया, बट ये चीजें ऐड होती रहती हैं और एंड के अंदर इतना खर्चा कर कर we go into some amount of depression. We have to take loans from people. We have to take do IVF on EMIs. We have to take some sort of sometimes हमारे मेरे मित्र आके बताते हैं कि उनको अपना खेत खलिहान भी बेचना पड़ा, और they have to they have to actually take loans from their family members to do their IVF, which I feel is in case required it's okay. बट आपको जानना है, इसके लिए आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, और यही हमारे टॉक का पर्पस है, टू मेंटली प्रिपेयर यू. आपको 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 बताना कि जब आप आईवीएफ शुरू करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू दी सक्सेस रेट ऑफ द आईवीएफ साइकिल. एक अगर हम एक मान्यता प्राप्त सेंटर में जाएं, सो हमारा कितना आउटकम आता है आईवीएफ का, सक्सेस रेट कितना आता है हमको जानना है. इसके लिए सबसे पहले हमको देखना है कि हमारा एज कितना है, हमारा उम्र कितना है. So in case you find that we are a young couple, and more than the male, the female partner is less than 30, 35 years, we can be rest assured कि सब कुछ ठीक है. When the female partner's age is less than 35, the chance of her success of an IVF, when the ovarian reserve is fine, जब उनके अंडे ठीक से बनते हैं और हस्बैंड का सीमेन फैक्टर बॉर्डर लाइन है या ठीक है, so we can be assured that this couple will have a success rate of nearly 40%. So एक दंपति का एज कम होना less than 35 years, और एक लेडी के अंदर उसके जो एक्स बनते हैं उनकी मात्रा, उनका नंबर ठीक होना, which we can check by doing a thing called FSH and a test called Anti-Müllerian Hormone, or we can do an ultrasound for her. जब हमें पता चलता है कि उनके एक्स ठीक से बनते हैं, सिर्फ ट्यूब से ब्लॉक्ड है, वी कैन बी वेरी वेरी श्योर. आपको जो लोग जुड़े हैं मेरे साथ में, उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. आई कैन गारंटी यू दैट योर सक्सेस रेट विल ऑलवेज बी मोर देन 40%. एज पे बहुत चीजें निर्भर करती हैं, और एज के अनुसार ही आईवीएफ के सक्सेस रेट आते हैं. Now, as we cross age of 38, 39 years, the chance of our success will start falling down. बिकॉज जो एक स्त्री में जो ओवरीज में जो
डिम होते हैं, जो अंडे होते हैं, the number of eggs which she is having in her ovaries, though the number may be okay, but their quality will start coming down. So the numbers may be fine, but the quality will reduce. And then as the woman crosses the age of 38, 39, or that is 40, her IVF success rate will come down to 15 to 16%, even less than that. So 4 साल पहले तक I said 40%, और 3.5 4 साल के बाद में it will become barely 14 से 15%, and as we cross 40 it will keep falling down, and by around 42 the chance of success would be around 3 to 4% only. So आपको पहला जो पहली जो लेसन सीखा है हमने, the first thing which I have told you now when we are discussing the topic for today, that the IVF outcome depends upon the age of the woman and not what center claims. सेंटर्स में से कि हम शर्तिया बच्चा पैदा होगा, शर्तिया सक्सेस रेट विल बी 80%, 90%, और 3 IVF के बाद पैसा अगर आपका बच्चा नहीं हो पाता है तो वी विल रिटर्न योर मनी, वट एवर थिंग्स आर देयर इज अप टू देम। बट आपको ये जानना है कि अगर आपका उम्र ज़्यादा है 38, 39 से, तो आपका माँ बनने का जो परसेंटेज है वो थोड़ी कम होती है। तो आपको इससे बताने का मतलब आपको डराना नहीं है, बट आपको अवगत कराना है कि ये एक प्रिंसिपल है आईवीएफ का, जिसके बारे में आपको जानना है। दूसरी बात आपको ये जाननी है कि आपका आईवीएफ करने का तरीका क्या है। अगर हम सेल्फ आईवीएफ करते हैं, अगर हम आपके एक्स निकालते हैं जो कि एक अच्छी मात्रा में आपके बदन में है, तो और आपका जो एग को जांचने का तरीका है, 2 टेस्ट होते हैं। वन इज कॉल्ड एएमएच टेस्टिंग, एंटी मलेरियन हार्मोन, जो हमने पिछले हफ्ते भी हमने बात किया था इस चीज के बारे में। सेकंड इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर दोनों आपके हार्मोन्स की वैल्यू ठीक है, एफएसएच का वैल्यू अगर 8 से कम है, और अगर एएमएच का वैल्यू आपका 1.5 से ऊपर है, तो 1.5 से ऊपर है, इट्स मोर देन 1.5 nanograms per ml, you got nothing to worry at all. I mean, then you are actually blessed and you won't have any problem at all in conceiving. But problem comes when a young girl or an elderly woman has got low ovarian reserve. यहाँ पर हम देखते हैं कि AMH के वैल्यूज कम होते जाते हैं, समटाइम्स दे आर अराउंड 0.5, 0.8। बहुत कॉमनली हमको फोन आते हैं, पीपल कॉन्टेक्ट अस एंड आस्क, मेरा AMH 0.08 है, 0.02 है, मैं क्या करूं, मेरा AMH 1 है, मैं क्या करूं। इन सवालों का ये समझ लीजिए कि अगर आपका AMH 1 से कम है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में आपको जागरूक होना जरूरी है। यू मस्ट वेक अप टू द प्रॉब्लम। बट एनी एमएच मोर देन 1 यू शुड नॉट बॉदर, एंड इवन लेस देन 1 जब आपका एमएच होता है, से मोर देन 0.5, डोंट वरी एट ऑल। योर सेल्फ आईवीएफ इज पॉसिबल इन केस योर एज इज लेस देन 35 years। परंतु इन केस अ वुमन हैज गॉट एज मोर देन 37, 38 एंड एमएच इज लो, इन सच अ केस वी कैन हैव प्रॉब्लम्स। सो एमएच की जो वैल्यू है, नॉर्मली अगर 1 से ऊपर है या 0.6, 0.7 से ऊपर है, आपका अपना सेल्फ आईवीएफ कैन बी very very successful in case your age is less than 35, 36 years, and in case age increases then the problems can definitely increase. So this is one condition which will affect your egg reserve, and very commonly we again get, अभी भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, people want to know एक ही सवाल कि मेरा AMH 0.8 है या 1 है, हम डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर ने बोला कि हम आपका विल कैरी आउट योर डोनर सेट। हमारा AMH 1.2 है, हमको बोला गया आपका AMH कम है, हम बहुत घबरा गए हैं, शुड बी गोइंग फॉर डोनर सेकंड और नॉट। तो मेरा आपसे एक ही गुजारिश रहेगी, डोंट वरी अबाउट AMH मच इन केस यू आर यंग। Problems are there. I'm very very sure that the clinics and doctors who are seeing you will handle you very very appropriately. But आप चिंतित नहीं होना है, ये डिसीजन आपने लेना है और आपने डॉक्टर को बताना है कि मेरा AMH इतना है, आई एम अवेयर ऑफ दैट, एंड I'd like to have my own I like to have my babies with my own eggs. This you can tell him or her very very clearly, and I'm sure that things will work out in your way. थर्ड कंडीशन होती है जब sperms are having bad infection.
मैंने आपको पहले बात किया था अबाउट स्पर्म्स के बारे में। जब स्पर्म्स का नंबर कम होता है, अगेन डोंट वरी, इक्सी कैन बी डन, यू नीड नॉट वरी एट ऑल। द चांस ऑफ एन इक्सी वर्सेस नेचुरल साइकिल इज नियरली द सेम, नीड नॉट वरी अबाउट दैट एट ऑल। आपका जो आउटकम है, आउटकम बहुत अच्छा रहेगा, दिस आई कैन एश्योर यू। Second is जब sperms होते ही नहीं है, in that case we can put a needle inside your testes. We put the needle inside the testes, or the epididymis and the sperms are being taken out. In certain cases, बदन में sperms बनते ही नहीं है. In that case, we have to go in for a donor sperm insemination. We have to ring up the sperm bank and get the sperms from them. So what we have learned is that जब sperms की मात्रा कम है, तब भी बच्चा होने का जो चांस है, द परसेंटेज इज वेरी वेरी नाइस आफ्टर द सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल एंड एक्सी। और जब स्पर्म्स नहीं है बदन में, तब भी हम डोनर स्पर्म्स लेकर एक प्रेगनेंसी क्रिएट कर सकते हैं। द प्रॉब्लम कम्स व्हेन द स्पर्म्स आर इन्फेक्टेड। जब एक ड्यू टू बैड हाइजीन या किसी कारण से when the sperms have got a large number of pus cells, there is debris, there is infection inside the semen sample, जो कि हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं बहुत इलाज करने के बाद में। In such a case, there can be a problem and the IVF success rates can come down. So when the age is young of the couple, nothing to worry. Tubes are blocked, nothing to worry. When the egg reserve is low, but the AMH is more than 1, nothing to worry. And when sperms are less in number or sperms are not there, again, जो हमारी प्रणाली है, our methodology of IVF will shift from self IVF to donors from IVF, but the chance will be very, very bright. There is not much of difference. But when the sperms are infected, that time the problem crops up, and this is what I wanted to tell you. So here the pregnancy rate will maybe less, so you have to be mentally prepared for such a scenario. So, so after this, now what are the limits of IVF? हमको IVF के लिए मना कब करना है? जब when we go to a doctor, हमें देखना है कि जब हमारे हमारा अगर एज 42 से ऊपर है फॉर ए वुमेन and her reports of AMH and FSH are abnormal, then we should know that हमें अपना IVF ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि if you try, you spend money, but the outcome would be not good. So कहीं पे हमको एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी. We have to draw a line somewhere, and then we say, okay, no, then now we have to go for a donor cycle. I have seen many couples who are undergoing multiple IVF cycles, 4, 5, 6, and their age is 42, 43. Here we have to know, okay, in case our egg reserve is poorer, we have to say no. We say, okay, fine, we agree for donor egg cycle. This will increase your success rates. So how much is the success rate now? Looking at some data, जैसे मैंने बताया, in case the age of the woman is less than 35 years, the chance of the pregnancy will be nearly 40% plus. When the age becomes more than 38, 39 years, the chance of pregnancy will fall down to around 10 to 11%, and more than 42, 43, it may become 3 to 4%. These percentages we have to know. Now, what happens in case we have to be going for a donor egg? Yeah, this query comes again and again. Uh, they say, Doctor Saab, you said that the chance of pregnancy is 40%, which is a true figure. What happens in case we go in for a donor egg? So आपको ये समझना है कि अगर donor egg cycle हम करते हैं और आपका uterus, the uterine lining is good, is it doesn't have any problem, the chance of the conception may even be touching 45 to 70%. So with the donor eggs which we get from young women, which are recruited by the banks, and your in case and your endometrial lining is very good, उसका blood supply ठीक है और uterus का shape ठीक है, the chance of success may even touch 50 to 70% or even higher. So donor cycles always give us better outcomes. This we have to know. So अब तक हमने बात किया the causes of why do we carry out IVF and why is IVF becoming so common in today's scenario. It is easily available to all of us.
We spoke about the pricing of IVF cycle. We have spoken a cycle of rupees 50-60,000 becomes of 2 lakhs. So what to do about this? So we have to understand how things are being added. So always talk to your doctor. Tell me the pricing of the IVF cycle, all inclusive. Tell me the complete pricing. Don't give me the pricing in. Don't keep adding on. Give me the complete pricing, and the average pricing of a very beautifully done IVF cycle should be around 1.4 to 1.5 lakh rupees, and that should include everything. तो यही एक राइट एक्सपेंडिचर है आईवीएफ साइकिल करने का, जिसके अंदर आपका स्टिमुलेशन होगा, जो छोटे मोटे जांच होते हैं सारे जांच होंगे, आपका आईवीएफ होगा, आपके एग निकाले जाएंगे, लेबोरेटरी में उन एग्स के ऊपर काम किया जाएगा, इक्सी होगा, फ्रीजिंग होगा, और आपका एक ट्रांसफर भी होगा। ये तकरीबन 1.5-1.6 लाख में सारा आपका हो सकता है। इसके ऊपर जो होता है दैट बिकम्स एक्सपेंसिव। These were few things which came to my mind. I spoke to you. Now I'll go to few queries which have come to me. These queries are total 11 in number. I'll take them one by one. So I've got a query from Miss Kadambari Avasti. Miss Kadambari Avasti जानना चाहती हैं कि डॉक्टर प्लीज टेल अस द चार्जेस इन केस ऑफ डोनर एग आईवीएफ। वो जानना चाहती हैं कि डोनर एग आईवीएफ करने पे कितना खर्चा आता है। तो ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। एक आईवीएफ का जो चार्जेस है दे आर अराउंड 1.5 लाख रुपीस इन ए वेरी गुड आईवीएफ क्लिनिक, नॉट एन एवरेज, गुड आईवीएफ क्लिनिक। जब हम डोनर जोड़ते हैं इसके अंदर तो तकरीबन 70 to 80,000 का खर्चा हमारा और जुड़ जाता है। ये डोनर्स जितने भी एग आते हैं, यू हैव टू इंश्योर दैट दिस एग्स आर गिवन टू यू ओनली। तो जितने भी एग्स हैं आपको ही मिलेंगे। तो इसका खर्चा इज अराउंड 75 to 80,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। तो पूरा लैब का खर्चा मिलाकर व्हेन वी ऐड ऑन एवरीथिंग, योर डोनर साइकिल in a good IVF clinic should be costing you around rupees 2 lakh rupees. To understand, donor cycles are expensive because we are adding donor charges, the charges for the lawyer, legal, इसमें legal paper बनते हैं। तो सब मिलाकर आपको तकरीबन ये 2 लाख का साइकिल पड़ता है in case you go for a donor cycle. Then sometimes people ask about surrogacy. You do surrogacy, how much will it cost? तो surrogacy के अंदर भी खर्चा जो है IVF का इतना ही रहता है, around 1.4-1.5 lakh rupees, but we have to pay for the surrogate. कुछ लोग surrogates के लिए भी चार्ज करते हैं, but these are very debatable issues. I won't touch upon them. Then I have a query from Miss Nidhi. ये जानना चाहती हैं कि मेरे 4 failed IVF cycles हुए हैं और इसमें से 3 फ्रोजन साइकिल थे, एक फ्रेश साइकिल था। मेरा AMH is 5.48. So 5.48 is a very good AMH, Nidhi, you have got, and TSH is 3.34. Semen analysis count is okay. So इनका अब तक 4 बार ट्रांसफर हुआ है, 3 बार फ्रोजन और 1 बार फ्रेश। ये जानना चाह रही है कि मेरा प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रहा है। तो निधि, when I see your reports, what I understand is that your thyroid values are quite high. They are 3.334, which you have sent to me on the platform. But I feel that आपको दवाई खानी चाहिए थायराइड की, और आपका जो वैल्यूज हैं TSH का, इसको आपको तकरीबन 2.5 तक लेकर आना है। ये सबके लिए जरूरी है जानना कि थायराइड का 2 चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं किसी आईवीएफ साइकिल के अंदर बिफोर वी डू। ये आप सबको करवाना है अपने लिए। And in case I have few doctors also logged in, they have to always also learn that we have to carry out thyroid assay for our couples. And agar in any lady, in case she has TSH values more than 2.5, we have to put her on thyroid medicines. Number 1. Number 2, vitamin D के values हमको vitamin D के values हमें check करने चाहिए, and they should be more than 30 to 40 minimum. अगर 30 से कम है, इनके less than 30, we have to put them on vitamin D3 sachets और tablets. जब तक थायराइड का वैल्यूज ठीक नहीं होता है, जब तक विटामिन डी का वैल्यूज ठीक नहीं होता है, मेरा गुजारिश है आप सबके साथ कि आप अपना आईवीएफ मत करवाएं, इन रिपोर्ट्स को ठीक आने दें।
So Nidhi, one more thing for you. You have undergone 4 cycles. I feel that you should undergo a test called DNA fragmentation index for your husband. तो आपके जो स्पर्म्स बनाए, जो स्पर्म्स लिए गए थे, उनसे जो बेबीज क्रिएट किए गए हैं, वो आपके बार आपके गर्भाशय में 3-4 बार डाले गए हैं. There's a condition called DNA fragmentation of the sperms, and it is quite common. So ये जो embryos बनते हैं, embryos they look good in case they form, but they are having some problems in them, so they don't implant. And in case they implant, they may undergo early abortions. So आपकी रिपोर्ट देखकर before you undergo next pickup, I think I recommend that you should take some tablets to control your thyroid. Then you have to take some tablets to you have to do DNA fragmentation and take some antioxidants to look after your PCO pattern of ovaries. अगला सवाल मेरे पास में है विजयपाल दरौल का, अगर वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में. वो कहते हैं कि शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन हम अब तक बाप नहीं बन सके हैं. तो विजय जी, आपकी रिपोर्ट्स मेरे पास में नहीं है. सो आई कैन गारंटी यू, मैं आपको एक प्रॉमिस दे सकता हूँ कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन हो चुकी है आजकल, और ये कारण डॉक्टर्स का नहीं है. ये एक टेक्निक है जहाँ पे बहुत चीजें जुड़ती हैं साथ में. वी नीड एन एम्ब्रोलॉजी लेबोरेटरी, वी हैव एन एम्ब्रोलॉजिस्ट, सो वी गॉट वेरी गुड अल्ट्रासाउंड मशीन्स. सब जुड़ के ऐसी जांचें बन चुकी हैं जो कि आपका जो कारण है पिता न बनने का, उसका टेस्ट कर सकते हैं. और आजकल के ज़माने के अंदर अगर किसी भी लेडी के अंदर गर्भाशय ठीक है, तो उसका बच्चा होगा ही होगा. सिर्फ प्रणाली बदल जाती है. बहुत कम लोग रहते हैं ऐसे, कुछ लेडीज ऐसी रहती हैं जिनके अंदर ये सब नहीं हो पाता है, परंतु अपना तरीका चेंज करके, ट्रीटमेंट का मोडालिटी चेंज करके, everyone can become a parent. This is what I feel. तो अपना दिल छोटा नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारना है. You consult the doctor who is nearby, and in case you want, you can अभी आप हमसे जुड़ चुके हैं, you can send me your reports, खासकर your semen का रिपोर्ट और वाइफ का ट्यूब टेस्टिंग का रिपोर्ट, and definitely हम आपकी हेल्प करने का ट्राई करेंगे. अगला सवाल है यूनुस सेठी का. ये जानना चाहते हैं कि हमारे 3 साल शादी को हो गए हैं, पर संतान नहीं है, चेकअप करवाया है. तो विजयपाल जी को 7 years हो गए थे एंड ही हैज गॉट 3 years. तो मेरा जवाब वही रहेगा, आपको जो बेसिक काम करना है, वाइफ का ट्यूब टेस्टिंग का जांच करना है, जिसे हम कहते हैं HSG. आपको अपना शुक्राणु का जांच करवाना है, जिसे हम कहते हैं सीमेन एनालिसिस. वाइफ के अंडे बनते हैं कि नहीं बनते हैं, whether she makes good quality eggs or not. To know that, you have to she has to undergo a test called FSH and Anti-Müllerian Hormone. इनके बारे में हम पहले वार्तालाप कर चुके हैं. और जब ये रिपोर्टें आ जाती हैं, तब हो सके तो in case possible contact the doctor near to you, or you can come to CK Birla Hospital in Gurgaon, and we have very nominal rates. हमारे रेट्स बहुत ही जो कॉम्पिटिटिव, जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव और जेन्युइन रेट्स है हमारे, एंड वी विल गिव यू गुड केयर. यू कैन कम टू अस आल्सो. अगला सवाल है जैस्मीन चौहान का. ये कहती हैं मेरी दीदी के शादी को 9 ईयर हो गए हैं, उनको बेबी नहीं है. तो जैस्मीन जी बात कर रही हैं अपनी अपनी आई थिंक बड़ी बहन के लिए. उनका भी एक नियरली द सेम सवाल है. शी वांट्स टू नो के सो सेम चीज जैस्मीन जो मैंने बताई है विजयपाल और यूनिवर्सिटी के लिए, सेम थिंग अप्लाइज टू योर दीदी. शी कैन ऑलवेज send us her reports, and then we can take the things further. बट आई फील कि जिनको 7-8 साल हो जाते हैं विवाह को, उनको अपने समय का ठीक इस्तेमाल करना चाहिए, and at the earliest they should be able to contact the doctors. That's very very important. अगला सवाल, चौथा सवाल है बबीता आर्या का. बबीता आर्या जी लिखती हैं कि सर मेरी एज 39 ईयर्स की है. तो नो शी इज गॉट एज ऑफ 39 ईयर्स. मेरी डेट बंद हो गई है, बच्चा चाहती हूँ, बहुत इलाज करवाया है पर फायदा नहीं हुआ है. सो दिस इज फ्रॉम बबीता, व्हाट शी हैज रिटन टू मी. So we have to now understand, as I told you,
that after a particular age, the number of eggs being formed are less in number. So there is a problem. So बबीता जी, जब किसी स्त्री के अंदर एग नहीं बनते हैं, when the woman doesn't form any eggs or the number is very low, she would stop having her period. पहले periods कम होते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। जो आपकी रिपोर्ट देख के मैं समझ पा रहा हूँ, इसका मेन कारण है probably you have gone into premature ovarian failure. आपकी ovaries शायद फेलियर की तरफ बढ़ रही हैं या आपको ओवरीज का फेलियर हो चुका है। फेलियर मतलब ओवरीज काम नहीं कर रहे हैं। बट आई कांट बी श्योर, वी हैव टू कैरी आउट योर एएमएच एंड एफएसएच। ये दो जांच करके आप हमें बताएं और फिर हम इस वार्तालाप को आगे बढ़ा सकते हैं। You have my Facebook address. You can always send us your reports. You can take my number from my profile and you can always talk to us. But आपके लिए बहुत जरूरी है पीरियड्स के सेकेंड डे पर जो जांच होती है एफएसएच एएमएच वो करवाने चाहिए। वी ऑल्सो एडवाइज एन अल्ट्रासाउंड ऑन डे 2 और डे 3, बट आपको पीरियड्स आते ही नहीं है। सो आगे कैसे बढ़ें, तो आप अपना जांच कभी भी करवा सकती हैं। जस्ट गेट योर एएमएच एंड एफएसएच testing done and send me the report, and then we will tell you how to take it further. Or similar query has come from Sangeeta Arora. संगीता जी जानना चाहती हैं कि मैं unable to conceive. It's been 8 years and married. मैं क्या करूं? I'm married from मेरी शादी को 8 साल हो गए. I'm unable to conceive. What should I do? Same thing which I've told to Jasmine and Babita and Vijaypal and Yunus, that we have to get the basic test done and then you revert back to us. हिमानी बेस्ट जानना चाहती हैं, गुड इवनिंग सर, माय क्वेरी इज दैट द फर्स्ट बेबी आईवीएफ से हुआ है तो क्या सेकंड बेबी नॉर्मल कंसीव कर सकते हैं? ये बहुत ही बेहतरीन, वेरी गुड क्वेरी कि पहला जो बच्चा इनको हुआ है, द फर्स्ट प्रेगनेंसी हैज अकर्ड विद आईवीएफ, कैन द सेकंड चाइल्ड be born naturally or conceived naturally, or she will require IVF for second cycle also. So इसका आपको जानना है हिमानी जी, that it all depends upon the indication of your previous IVF. अगर आपका पहला IVF first IVF was done due to tubal factor infertility, in that case nothing can be done. In case it was done with sperm donation, then nothing can be done. Then you will have to require IVF only. बट इन केस आपकी ट्यूब्स खुली हैं और आईवीएफ करने का कारण शुक्राणु के अंदर शुक्राणु का नंबर कब होना था या उनका कुछ मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम था, इन दैट केस यू मे कंसीव ऑन योर ओन. सो रिपीट आईवीएफ इज ओनली इंडिकेटेड इन टू कंडीशंस, वेयर the tubes are blocked and on the other hand sperms are not formed in the body of the male. और स्पर्म्स जो है, स्पर्म्स अगर बनते हैं तो बहुत कम मात्रा में बनते हैं और हमको उनको एक सुई डाल के स्पर्म्स को निकालना है, तभी रिपीट आईवीएफ करना है, अदरवाइज आईवीएफ की जरूरत नहीं है. एक अगला सवाल है रिया तिवारी जी का. रिया जी जानना चाहती हैं कि मेरी भाभी के बेबी नहीं रुक रहा है, मैं क्या करूं? सो ये आई एम नॉट क्लियर कि ये आईवीएफ ये बच्चा नहीं हो रहा है या फिर आपको आपकी भाभी को रेकरेंट एबॉर्शंस हो रहे हैं, मतलब बच्चा रुकता है और बच्चा गिर जाता है. सो रिया जी, आप हमको अपनी जो रिपोर्ट्स हैं भाभी की, अगर रिपोर्ट्स हमें भेजेंगे तो मैं आपको बेहतर इसका जवाब दे पाऊंगा. सो या तो व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर या इंस्टाग्राम या ट्विटर, लिंक्डइन, यू कैन सेंड मी योर रिपोर्ट्स एंड देन आई विल हैव टू टेक इट फर्दर. अगला सवाल है नागराज जी का, ये बेंगलोर से हैं. ये जानना चाहते हैं कि गॉट मैरिड 5 years बैक बट नॉट हैविंग ए किड एंड मेरा स्पर्म काउंट ठीक है. तो ऐसे केस के अंदर आपको अपना वाइफ का ट्यूबल टेस्टिंग करना चाहिए और अगर वाइफ का ट्यूब्स आर ओपन, दे आर वर्किंग वेल और आपका स्पर्म काउंट ठीक है, I'll advise that you should go in for IVF. You could benefit by doing an IVF. So, Mr. Nagaraj, I think you should be looking at the tubal patency of your wife by doing a test called HSG. इसके लिए लेप्रोस्कोपी की जरूरत नहीं होती है. You can save some money. It's not required also. Do an HSG in case tubes are fine. Then you should go in for IUI. अगला सवाल है परमजीत सिंह का. वो कहते हैं कि 3 बार IVF हो गया, 5 बार FET हुआ, 2 बार सक्सेस हो गई पर हार्ट बीट नहीं आया, तो हम क्या करें? बहुत ही वेरी वेरी नाइस क्वेरी.
here he has conceived 2 times, but the pregnancy has not gone ahead. In such a case, I would request कि आपको अपना genetic test करना चाहिए. आपको अपना कैरोटाइपिंग करना चाहिए, विच इज ए ब्लड टेस्ट. आपका और आपकी वाइफ का टेस्ट होना चाहिए कैरोटाइपिंग का, जो हमें बता पाएगा कि आपके जो आपकी बॉडी में कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स तो नहीं है. ये जांच करनी है. दूसरा, आपको जांच करनी है अपने थायराइड की. आप दोनों ने अपनी जांच करनी है. विटामिन डी की जांच करनी है. और आपको अपने स्पर्म का डीएनए टेस्ट करवाना है. दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट. आई थिंक दैट्स ऑल. ये सवाल थे जो मेरे से पूछे गए आज, और इसके साथ मेरा समय भी संपूर्ण हो गया है. आई थिंक आई हैव टॉक्ड 1 hour as I had promised to you, and I am very grateful to you for that you have all joined me in such great numbers. And जो भी आपके सवाल हैं जहन के अंदर, जो भी डाउट्स हैं, इनका सवाल मैं शायद नहीं दे पाया ड्यू टू मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं है. सो आई एडवाइस के यू हैव माय प्रोफाइल. You can contact me at my LinkedIn number, LinkedIn address, Twitter, Facebook, wherever you're comfortable. You can contact me, and we can take it further. Uh, एक और सवाल है राकेश मिश्रा का. ये एक सवाल, आई कम बैक, आई वोंट लॉग आउट. बहुत अच्छा सवाल पूछा उन्होंने. तो राकेश जी जानना चाहते हैं, हेलो डॉक्टर तलवार सर, वी हैव बीन थ्रू आईवीएफ procedures, but till now every time we are facing implantation failure. We did ERA and NK cell test with no, but we are facing it. Please shed some information. ये बताना चाह रहे हैं कि इनके बेबीज इम्प्लांट नहीं कर रहे हैं. They have underwent a thing called ERA, that is endometrial susceptibility assay. ये एक जांच होता है जो कि किया जाता है जबकि बच्चे बैठते नहीं हैं. इनके भी बच्चे बैठ ही नहीं पा रहे हैं. सो दे आर नॉट इम्प्लांटिंग, एंड ERA के बाद भी इनके बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं. सो I will say that अगर ऐसा कंडीशन होता है that you went through multiple IVF failures and your babies are not implanting as per what we have written here, I would say कि जो जांचें मैंने पहले सबको करने के लिए बोली, वो जांचें आपको भी करनी चाहिए. It's not important that we may be having a very small issue. Probably your vitamin D level may be very low, or your wife's vitamin D level may be very low, or your thyroid values may be abnormal. But हम एक बहुत we are going in for a very expensive test called ERA. So आप कुछ बेसिक अपनी जांच करें. That is number 1. Number 2, you have to do your color Doppler of your endometrium on day 9 of the periods. So महीने के 9th day के ऊपर अपनी वाइफ का कलर डॉपलर और 3D स्कैन कराएं. दिस इज इम्पोर्टेंट. और इसके बाद भी अगर आपको फेलियर्स होते हैं, आई वुड फील दैट यू शुड बी अंडरगोइंग समथिंग कॉल्ड पीजीएस, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग एंड स्क्रीनिंग. तो अगर आपके बच्चे के अंदर कुछ इम्प्लांटेशन कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, दैट कैन बी फाउंड आउट बाय डूइंग अ बायोप्सी ऑफ द एम्ब्रियो. But before you go in for a biopsy of the embryo, I would rather request that you have to go in for your own karyotyping. Your karyotyping is a simple blood test. They'll take a few 2 ml of blood of yours, and उस blood की जांच करके वो बताएंगे कि आपके बच्चे के अंदर बच्चे क्यों नहीं बन पा रहे हैं. उनमें कुछ बनावटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. Before I leave, one more question has come up. This again has come up from Ms. Kadambri. Ms. Kadambri का सवाल बहुत ही एक जो मैंने बात बोली वो सवाल दोबारा पूछ रही है. इनका एक सवाल पहले भी था, उनका एक और सवाल आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लिनिक्स डू नॉट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ हिडन एक्सपेंसेस. जो डॉक्टर के क्लिनिक्स हैं वो हमको ठीक अपना प्राइस नहीं बताते. सो मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा बिकॉज एवरीवन वर्क्स इन अ डिफरेंट वे. बट मैंने आपको ये बता दिया है कि खर्चा कितना आना चाहिए. तो आप जब भी, इसमें गलती काफी हद तक हम लोगों की भी है, आपकी भी है, कि आप अपने इलाज के बारे में जागरूक नहीं है. यू डोंट सी कि आपके साथ क्या होने वाला है. आई हैव डन अराउंड तकरीबन 14,000 प्लस आईवीएफ के केस किए हैं. एंड आई टेल एवरी पेशेंट, आपको ये आपके अंदर ये जागरूकता होनी चाहिए, एक एम्पावरमेंट होनी चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है. आप जानते ही नहीं है. अगर हम जानेंगे ही नहीं, so anybody will do anything with us.
सो कादम्बरी जी, मेरा आपसे एक ही एडवाइस रहेगा कि जब भी आप कभी आईवीएफ करवाएं, टेक द कंप्लीट पैकेज। उनको बोलना है कि मुझे 50-60 हज़ार का जो फिगर आप नेट पे डाल रहे हैं, आप हमें बताएं कि हमारा टोटल प्राइस कितना है आईवीएफ का। खर्चा ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, दवाइयाँ, अल्ट्रासाउंड, in case we have to go in for sperm donation, egg donation, in case we have to go in for laparoscopy. Tell us in one go. So in the first meeting only, or before you go, should write to them with your reports and get the final figure from them. Otherwise, we'll always we don't know what to do. I'm just looking at any more queries which we have got. Yeah, जैसे query from जितेंद्र चौधरी जी। जितेंद्र चौधरी जी जानना चाहते हैं, I still have 30 people live, and I'm so happy that you are uh, asking me so many questions. So I'll take around 10 minutes more. जितेंद्र चौधरी जी का सवाल है, what is important in IVF results despite of pathological conditions of couples? What is important in IVF lab results despite pathological conditions of couple? तो मेरे को ये सवाल समझ में आ रहा है कि इसमें लैब का रोल क्या है आईवीएफ करने के। हम पहली बात तो देयर इज प्रॉब्लम विद द कपल, सो दे हैव कम फॉर आईवीएफ। व्हाट इज द आईवीएफ लैब का एक बहुत एक जो दिल की धड़कन है, अगर हमारा दिल है, सो एक एआरटी क्लिनिक का जो दिल है, जो उसके अंदर जो हार्ट है, दैट इज एन आईवीएफ। IVF lab has to be of very good quality. So keeping that in mind, at CK Birla Hospital, we have got the most advanced lab in the country presently. So laboratory is the heart of the treatment. And whenever you go in for an IVF treatment, ask the doctor. मतलब आप तो बहुत अच्छे हैं, but आपकी लेबोरेटरी कैसी है? आपकी लेबोरेटरी में सामान कैसा है? आपकी लेबोरेटरी में जो इक्विपमेंट है वो किस तरीके का है? और आपका एम्ब्रोलॉजिस्ट कौन है? नॉर्मली एक किरदार, जैसे पर्सन अबाउट whom we won't know, that is an embryologist, and that I feel is the most important person in the laboratory. I've done embryology for nearly 17 years now. I am also a clinician. I realize the most important part, every part is important, but most important part is often good IVF equipment, good IVF laboratory environment, and a and very good quality एम्ब्रोलॉजिस्ट। तो अगर आपके पास इक्विपमेंट अच्छा है और अच्छा एम्ब्रोलॉजिस्ट नहीं है, तभी रिजल्ट नहीं आते हैं। यू कैन आस्क द डॉक्टर, इज योर एम्ब्रोलॉजिस्ट परमानेंट वन, और आप कहीं बाहर से बुलाते हैं। जिस भी लेबोरेटरी के अंदर 2 एम्ब्रोलॉजिस्ट नहीं है, तो वहां पर आप जाने से यू कैन अवॉइड गोइंग देयर। टेल द डॉक्टर कि आपके पास एम्ब्रोलॉजिस्ट कौन है, उनके नाम क्या है, और अगर उनके पास मिनिमम एक बहुत ही सीनियर या 2 एम्ब्रोलॉजिस्ट नहीं है, तो वहां पे आप जाना अवॉइड करें। अगर कहीं से एम्ब्रोलॉजिस्ट ट्रेवल करके आते हैं, इन केस दे आर गुड, डेफिनेटली गो हेड, बट प्रेफर टू गो टू ए प्लेस वेयर वी हैव इन हाउस एम्ब्रोलॉजिस्ट। हमारे देश के अंदर एम्ब्रोलॉजिस्ट की बहुत कमी है प्रेजेंटली, तो काफी एम्ब्रोलॉजिस्ट को मल्टीपल सेंटर्स में जाके काम करना पड़ता है। So in case they are good embryologists, you can search about them, and in case you find that they are well known, definitely you can definitely go to that clinic even if they are traveling. But the first choice should be going to the place where they have an in-house embryologist. So in this query that can there be a possibility? This is from Kadambari Avasti ji again. Kadambari ji जानना चाहती हैं, can there be a possibility of IVF success in case of endometriosis and bulky uterus with donor eggs? Can we articulate the success rate? It's wow, I've got a lot of questions. Next. I'm very happy that you people are getting involved. जब मुझे लोग बोलते हैं कि they get 500-600 people live, so I always ask सवाल कितने आते हैं? लेकिन सवाल तो नहीं आते हैं, लोग बहुत आते हैं हमारे लाइव प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे पास देखिए, as you can see, I had 12 queries here. निधि जी आखिर में थी, तो 12 सवाल यहाँ थे और यहाँ पे 5-6 सवाल मैं ऑलरेडी आंसर करने वाला हूँ अभी। I'm so happy that you are taking interest.
सो कादम्बरी जी जानना चाह रही है कि एंडोमेट्रियोसिस में सक्सेस रेट क्या रहता है, बल्कि यूट्रस, अब बल्कि यूट्रस विद डोनर एक्स में क्या आउटकम रहता है। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर बल्कि यूट्रस नहीं होता। एंडोमेट्रियोसिस में बल्कि यूट्रस तब होता है जब वो एंडोमेट्रियोसिस यूट्रस की बॉडी को अफेक्ट करता है। So when the endometriotic deposits occur inside the uterine cavity, in the uterine muscle, it is called adenomyosis. So uterus bulky hoga when there would be adenomyosis, and that occurs in endometriosis. But these are two different conditions. Or they can fibroids which are present. That can also make a uterus bulky. So आपको जानना है कि कोई भी चीज, anything which can lead to distortion of endometrial cavity, you have to know that babies, the embryos are formed in the fallopian tubes, and very gradually they move inside, they roll inside, and they finally will implant inside the uterine cavity in the endometrium. Any condition which will make the uterine cavity abnormal will cause problems. So, अगर किसी भी स्त्री में any woman has got adenomyosis, adenomyosis एक ऐसी condition है जिसका कोई actually इलाज ही नहीं. When somebody has endometriosis, we are not worried. The only condition in IVF where we are worried is adenomyosis. इसमें क्या होता है, जहाँ पे बेबीज को इम्प्लांट करना होता है, जो वो लेयर होती है, that is junctional zone between the endometrium and myometrium, that is a very important part of the uterus. So endometriosis can affect that part. So जब एंडोमेट्रियोसिस की जो वो लेयर है जिसे हम जंक्शनल लेयर कहते हैं वो अफेक्ट हो जाती है, then probably nobody can help us. There are ways, but it is a big challenge. Not everyone can manage such a patient. And whenever you get a condition called adenomyosis, go to good quality, good clinics. Anybody can treat, but anyone who's got an experience will make a difference. So go to good quality, well-known doctors only. The donor eggs के साथ या अपने एक्स के साथ chances are very bright with endometriosis. That doesn't lead to many problems. But with adenomyosis, either with the donor X or with the self X, problems can be there. And I think the doctor whom you visit, they'll carry out a 3D ultrasound for you. The best method to diagnose the problem of adenomyosis is carrying out a 3D ultrasound for you. Some people also carry out MRI, but 3D is good enough for us. And sometimes we also may require a thing called. बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेरी अगेन फ्रॉम जितेंद्र चौधरी जी. ये जानना चाह रहे हैं कि he wants to know that what is your advice for IVF clinic and lab COVID-19 pandemic? How do we deal with new viral crisis? Any particular guidelines for staff as well as? So I can understand that Jitendra Chaudhary ji is an embryologist or is a doctor. I can see him on, I can see his picture. So we have to, Jitendra ji, the guidelines which we had till around 2 days back, okay, when in this COVID pandemic we were not doing any IVF cycles. तो हम IVF pandemic जो COVID endemic था, इसे हम IVF क्यों नहीं कर रहे, ये आपको जानना है. कोरोना एक नई बीमारी है जिसके बारे में people didn't know. So we are all learning from the disease, and as you are finding that as coming to India, we were able to handle the problem better. Why? Because we had learned from our experiences of Europe, China, US. हमें उनसे बहुत सीखने को मिला. And that is the reason we found out that by having a lockdown, we can avoid the problem. So we are all locked up at homes. Doctors are working, police people are working, a lot of people are working, but majority of the people are locked down. So ये एक पेंडेमिक, एक कोविड एक वायरस है, और वायरस जहाँ पर जाता है तो उस आदमी को, उस औरत को अफेक्ट करता है. हाउ डज दिस वायरस अफेक्ट अस? इस वायरस के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं एस प्रोटीन. तो दिस एस प्रोटीन इज लाइक अ स्पाइक, वी कॉल इट पेप्लोमेयर्स. जैसे अगर आप देखें कि लुक एट ए डियर, इट्स गॉट हॉर्न्स ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड. सो कोरोना वायरस हैज गॉट सम सॉर्ट ऑफ स्पाइक्स. ये प्रोटीन्स होते हैं. ये प्रोटीन एस है, प्रोटीन एम है, these are प्रोटीन HA है, प्रोटीन्स है. अब ये प्रोटीन लेके वायरस हर तरफ है, बट ये वायरस सिर्फ
इंसान को ये इफेक्ट करता है, जानवरों के अंदर अभी नहीं जा रहा है. How does it happen? It will affect the organs which has got some sort of receptors. अगर उसमें प्रोटीन्स जो हैं वो एक सेल में जाके जुड़ने हैं, और वो किस सेल में जुड़ेंगे, अगर ये स्पाइक है वायरस का तो ये किसी एक सेल में जाके जुड़ेगा. और किसमें जुड़ेगा? जिस सेल के अंदर ACE2 रिसेप्टर्स है. ये जो प्रोटीन है इसको एक सेल को अफेक्ट करने के लिए, लॉक होने के लिए वायरस को, एक प्रोटीन के रिसेप्टर चाहिए जहां पर जाके वो से जाके वो लाइक ए गम, जैसे वी हैव फेविकोल क्विक फिक्स, जाके चिपक जाता है इसके. सो जिस और जो रिसेप्टर होते हैं ये होते हैं लंग्स के अंदर. ये हमारी फेफड़ों में, छाती में ये रिसेप्टर पाए जाते हैं. दे आर कॉल्ड ACE2 receptors. So they bind and the lungs are getting affected. So they come with cough, cold, sore throat, starting from here. From here, receptors go down deep into our lungs. We find that these receptors are affecting the whole body, but primarily in the lungs. So now what happens is that initially we had a doubt whether these sperms or the eggs or the embryos, do they have such receptors or not. But now the studies which we have all over the world, they don't affect. We have found that the sperms and the eggs and embryos, they don't have receptors. So IVF हम पहले नहीं कर रहे थे, ये पहले हमको ज्ञान नहीं था कि ऐसा होता है कि नहीं. वी वर वरीड कि अगर हम लैब में करेंगे तो क्या वायरस जाके एम्ब्रियोस को अफेक्ट कर सकता है, फिर होने वाले बच्चे को अफेक्ट कर सकता है, या माँ के बीच में जब गर्भाशय ठहरा तो कैन द मदर गेट अफेक्टेड. सो वी हैड मल्टीपल थिंग्स इन आवर माइंड, बट नाउ दैट इज नॉट देयर. सो वी सेड हम IVF थोड़ा डिले करेंगे, बिकॉज all the people who come to us in IVF, the women don't come alone. They come in, they come with the whole family. So you'll find that they come with their in-laws, they'll come with their parents, they come with their husbands. So normally it's a family issue. The whole family is involved in treating the woman. So when we have multiple people coming to our hospital, and when the time is of lockdown period, when people cannot actually travel, so हर पेशेंट के पास अपना निजी वाहन नहीं होता है, हर पेशेंट के पास अपने निजी घर में कमरे नहीं होते हैं. So they are maybe traveling in the public transport, they may be meeting so many people while coming to us. और हम ये भी जान चुके हैं कि 80% of people they are asymptomatic, meaning that उनमें कोरोना वायरस स्प्रेड करने की क्षमता है. मे बी आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम this point of time and I am infecting people, but I look healthy, I don't have any problem at all. So 80% of people are healthy carriers. So these people who come to us, they are the healthy carriers. So we are afraid that they'll uh, spread infection to people in the laboratory, people in the hospital clinic. Number one. Number two, doctors may be infected. So we may infect the patient who is coming to us. So this is the second point. So we were not allowing people to come to the clinic. So we didn't know how to handle the disease. But now gradually we are opening up to the OPDs, and in case to visit the hospital, we are at Gurgaon. You can come and meet us anytime. Now we are seeing the OPDs regularly. But IVF अभी gradually will be starting after 10-15 days, but OPDs and consultations at Gurgaon we have already started. So any other query? I just want to see in case I missed anything. No, I think I just got a message from Kadambari Avasiji that her queries have been answered, and she's saying thanks to all of you for hearing to her also. I just go and find any pending query. So nil. So we had around 15 questions, 16 questions today, and I have taken 1 hour and 14 minutes. I think thank you so much for being with us. And in case you have any, feel free to. We are all doctors. We are working 24/7. Feel free to contact us anytime. You can go to my website. You can go to any digital media platform. Like you are there as your friend, as a brother, doctor. I'm also there. In case you want to visit, you can always call up CK Birla Hospital at Gurgaon, and we can set up an appointment. थैंक यू. अभी एक और सवाल आया सुदेश कामत जी का. ये बहुत ही हमारे करीबी मित्र हैं. इनका सवाल था
Okay, you mentioned that sperm, oocytes, embryos don't have receptors for the virus. So, आपके लिए सर मैं बोलना चाहूँगा कि जो स्टडीज जो अभी जो जो न्यू स्टडीज आई हैं चाइना से, डॉक्टर कामत एक देश के बहुत ही जाने माने एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं। आई थिंक ही इज द सीनियर मोस्ट एम्ब्रोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री, और उनका बहुत ही एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने सवाल उठाया है अभी एंड के अंदर। So, sir, I like to tell you that all the studies which have come from China, which are being published and all over the world, they say that sperm and oocytes, they don't have receptors for the virus. This is clear. And but there is one study from our country which has come, that come from Mumbai only. There is a single study, I didn't mention it here, which probably talks to contrary, but it's a single study. I didn't talk about that. But for the general audience, it is the answer is that ACE2 receptors are not present on them, and same thing has been said by the various international guidelines also. When we have more studies saying that they are present, probably I will bring that study from India forward. But as of now, I will say that they are not present. Thank you so much for joining us. Namaskar. Thank you. Have a nice day. And we'll meet after 1 week again with some other topic. Jai Hind. Thank you.